We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. So we will start about a discussion with the reproductive system. In last lecture we discussed about reproductive system introduction and the female reproductive system organs. We will revise it. So first, what is reproductive system? The continuity of species that is maintained by reproduction. So production of further new membrane of the same species, and the mode of reproduction is sexual. सेक्स कैरेक्टर्स डिवाइड इनटू 2 ग्रुप. वर्ल्ड को वो 2 ग्रुप में डिवाइड करता है, मेल एंड फीमेल. सो दिस आर द जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स. सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सो जितने भी अभी जेनिटल ऑर्गन्स मैंने बोले, राइट, जेनिटल ऑर्गन्स जो थे, राइट, सो दे फर्दर डेवलप, एनलार्ज एंड start functioning in response to internal secretion from the testes and ovaries. So what is sex characters? Mainly primary and secondary sex characters. Primary sex characters कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की. सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या है? मेल में आपको देखने को मिलेगा अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन फेस एंड प्यूबिक रीजन, देन वॉइस चेंज. फीमेल में आपको देखने के लिए मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग, देन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, देन अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन प्यूबिक रीजन एंड वाइडनिंग ऑफ द pelvis and accumulation of subcutaneous fat, then enlargement of sex organs that start with puberty, right? So सभी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. मेल में प्यूबर्टी स्टार्ट होगा बिटवीन 15 to 17 ईयर्स एंड फीमेल में स्टार्ट होगा बिटवीन 13 to 15 ईयर्स. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज ऑल्सो नोन एज जेनिटल सिस्टम. सो वो क्या है? सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म विच वर्क टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड इन ह्यूमन that include formation of gametes, that is gametogenesis. So sperm in male and ovum in female that lead to formation of zygotes. So ensure continuation of the species. जो gonads है, there are primary reproductive organs that produce gametes. Gametes that is egg or ovum, right? So testis है that will produce sperm in male and female में ओवरीज जो है वो ओवम को प्रोड्यूस करेगी. देन जैसे मैंने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरीज, एंड एक्सेसरी में आएंगे ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स. सो गैमेट्स में मेल में देयर इज एक्स और वाई एंड फीमेल में देयर इज एक्स एक्स ओनली एक्स. सो जो स्पर्म है और ओवम है जब फ्यूज़ हो गए, सो दैट कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. सो उसकी वजह से जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होगी. सो मेनली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस नंबर इन 2, राइट, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे एंड सिक्रेट करेंगे हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. गैमेट्स में स्पर्म एंड फीमेल में गैमेट्स दैट इज ओवा एंड हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो यू कैन सी हियर द फिगर दैट शो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल organs. So here the female reproductive system. So mainly जो female reproductive system है that is made up of internal and external organs, internal and external sex organs. So that function is reproduction of new spring, right? So major function क्या है reproductive system का? Make new life and ensure that the human species survive. So ये जो diagram है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें डिफरेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव
organs, internal as well as external sex organs, right? So in internal organ, sex organ, there is ovary, uterus, fallopian tube, vagina and mammary gland. And in external sex organ, there is labia, majora minora, clitoris, mons pubis. Then here you can see urethral opening, then opening of the vagina, the urethra and the hymen. So as I say, internal and external sex orgन से बना हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेन फंक्शन है उसका टू मेक अ न्यू लाइफ, राइट. देन उसके फंक्शंस है, कौन से फंक्शंस है उसके. फीमेल एक सेल का प्रोड्यूस करेंगे, देन हार्मोन को सिक्रेट करेंगे, हार्मोन में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देन प्रेगनेंसी, देन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो, then oogenesis, then parturition, nutrition to newborn baby by the breastfeeding, and fertilization of gametes to form zygote. So the image show the different sex organs of female reproductive system, right? You can see here the ligaments, fibria, that is finger-like structure, right? Then ovary, then uterus, then cervix, vagina, fundus of uterus, fallopian tube, right? So as I say, the internal sex organs and external sex organs of the female reproductive system. Then you can see here the primary sex organs, जैसे मैंने बोला mainly pair of ovaries. तो वो एग को प्रोड्यूस करेंगे और सिक्रेट करेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन को. और जो एसेसरी ऑर्गन्स है, दूसरे जो मैंने ऑर्गन्स बताई है वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे. जो मेमरी ग्लैंड है वो भी आएगा, बट इज़ नॉट जेनिटल ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, but it is important gland of female reproductive system. So we will now discuss about female internal sex organ, female reproductive system के internal sex organs. So mainly इसमें ओवरी जो है वो क्या करेंगे, एग को प्रोड्यूस करेंगे और हार्मोन को सिक्रेट करेंगे. यूटेरस है दैट involved in growth of fetus. Then vagina allowed for birth and menstruation flow and sexual intercourse. जो cervix है that is dilate in labor, and the fallopian tube है that is pathway for egg. Fertilization will occur there, right? Then what is vagina? So it is a short tubular organ, and there is canal that join the cervix to the outside of the body. And in vagina, the semen from the male penis that is deposited into the female's body at the climax of sexual intercourse. So that is known as ejaculation. And during the childbirth, जो vagina है that provide channel to deliver the infant from the uterus to its independent life. So it is known as birth canal, right? So birth canal क्यों कहा जाता है? So during the childbirth that provide channel to deliver the infant the uterus, right, outside the body of the mother. So इसको birth canal कहा जाता है. Then it is open externally into the labia, majora and minora. इसके functions क्या है? Mainly accepting the penis and sperm during the intercourse and serve as avenue of birth through which the new baby enters the world and provide path for menstrual blood and tissue to leave the body. The next is ovarian tubes, also known as oviducts and uterine tubes. So it is stretched from the uterus to ovaries and measure about 8 to 13 centimeter in length. The end of the fallopian tube that is lying next to the ovaries feather into the ends that is called fimbria. जो मैंने फर्स्ट फिगर आपने देखी उसमें था fimbria word, right? तभी मैंने बताया. So that is finger like structure, right? Then there are million of tiny hair like cilia line the fimbria, and they are interior of fallopian tubes. They beat in wave hundred of times a second, catching the egg at ovulation and moving it through the tube to the uterine cavity. मिली इसके चार पार्ट्स है, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला, isthmus and intranular region. जो इन्फेंटिबुलम है that is funnel shaped part near the ovary
फिम्ब्रिज, राइट. जो एम्पुला है दैट इज़ वाइड पार्ट. देन इस्थमस है, वो शॉर्ट एंड नेरो पार्ट है जो ज्वाइन करता है फैलोपियन ट्यूब को यूटेरस के साथ. ज्वाइन फैलोपियन ट्यूब टू यूटेरस. एंड लास्ट वन इज इंट्रान्युलर रीजन दैट पास थ्रू द थिक यूटेरिन वॉल टू ओपन इनटू यूटेरिन कैविटी. इसके फंक्शंस कौन से हैं? सो इट इज़ इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ ओवम, राइट, toward the uterus by the peristalsis and ciliary action. Then जो narrow tube है attached to upper part of uterus and serve as tunnel for the ova or egg cell to travel from ovaries to the uterus. Then fertilization जो है egg का by the sperm वो भी fallopian tubes में ही होगा. Then उसके बाद अगर fertilization होगा, उसके बाद जो fertilized egg है वो कहाँ पे मूव होगा? यूटेरस में मूव होगा, where it implant into the lining of the uterine wall, right. अगर वहाँ पे implantation fertilization नहीं हो रहा है, right, so if there is no fertilization within the 24 or 36 hours after the ovulation, it will deteriorate and it is removed by the body immune system as other dead cell in the body. Now uterus, that is womb, right, also known as womb, that is large, hollow, highly muscular and inverted pear-shaped structure. It is a home to developing fetus. In इसके mainly 3 parts है: cervix, corpus and fundus. Cervix, that is neck of the uterus, corpus body of the uterus, and fundus is upper portion of the uterus where pregnancy occurs. Then cervix साइड से नेक ऑफ द यूटेरस, मेनली 2 फंक्शन है इसके: मेंटेन फर्मनेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इन प्रिपरेशन फॉर लेबर एंड डिलीवरी द सर्विक्स soften and become more distensible, so that is called cervical ripening. Then जो corpus है, so mainly composed of 3 layer: perimetrium outer layer, myometrium middle layer and endometrium or uterine lining, that is inner layer, right. So pregnancy कहाँ पे होती है? Pregnancy occur when the fertilized egg that implant into the endometrial lining and the shedding of the functional endometrial lining that is responsible for menstrual bleeding. Then यहाँ पे फिगर में आपको देखने के लिए मिलेगा the uterus, इसके 3 parts जैसे कि fundus, body of the uterus, that is corpus, then cervix, vagina, and the layer are endometrium, myometrium and perimetrium, right. Then चेंजेस कौन से होंगे यूटेरस में? सो इसके साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस होंगे इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेक्सुअल लाइफ. जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन दैट विल बिकम एनलार्ज और बिकम मोर वैस्कुलर, राइट. और जो एंडोमेट्रियम है दैट विल बिकम थिकन्स विथ मोर ब्लड सप्लाई. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट विल become very much enlarged with increase in weight, and after the delivery it will come back to its original size. उसका जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, बट जो कैविटी है दैट विल रिमेन लार्जर एंड द यूटेरस इन ओल्डर एज दैट विल बिकम एट्रोफिड, दैट इज श्रंक हो जाना या फिर साइज में डिक्रीज हो जाना ऑर्गन का या फिर कोई बॉडी पार्ट का या फिर सेल्स का और टिश्यू का, उसकी वजह से वो वीक हो जाएगा, राइट. सो दिस इज नॉन एज एट्रोफिड, मीन्स कि वेस्टिंग अवे और लॉस ऑफ मस्कुलर टिश्यू, राइट. सो दिस इज नॉन एज एट्रोफाइड. देन उसके फंक्शंस क्या है? एक्सेप्ट fertilized ovum that which pass through the uterotubular junction from the fallopian tube, or it become implanted into the endometrium and derives nourishment from the blood vessel and which develop exclusively for this purpose. And जो fertilized ovum है that will become an embryo, बॉल के साथ वो अटैच होगा यूटेरस वॉल के साथ, एंड प्लेजेंटा को क्रिएट करेगा एंड डेवलप करेगा into the fetus under the child birth. So site of implantation and fetal growth during the pregnancy, and also take part in the formation of placenta and explaining of baby during the parturition. Then ovaries, also known as female gonads,
or primary sex organs, mainly two in number. A small paid organs, oval shaped gland located near the lateral wall of the pelvic cavity, right? And they are attached at hilum to the broad ligament, and it has each ovary has a two portion, medulla and cortex. Medulla, that is inner zone, and cortex is outer zone. Medulla, central deeper portion of ovary, and cortex is outer border portion and functional part of the ovary. Then जो कॉर्टेक्स है इसमें मेनली आपको तीन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, connective tissue cells, and last one is intestinal cells. So at the each month one of the ovaries जो है वो रिलीज करेंगे मैच्योर एग को, दैट इज नोन एज oocyte. जो ओवरियन follicles है is the basic unit of the female reproductive biology. They are made of roughly spherical collection of the cells that are found in the ovary. So they contain a single oocyte or eggs. Then what is ovarian follicles? So ovarian follicles, that is consist of developing oocyte that is surrounded by one or more layer of cells that called as follicular cells. Now what is primordial follicles? So they consist of primary oocyte that are surrounded by single layer of flattened cells and develop in the fetus, and they are stage that is present in the ovarian at the birth and throughout the childhood. Then what is primary follicle? Follicle will, जो follicular cells थे they will become cuboidal. जो follicular cells जो है cuboidal बन जाएंगे, right? तो primary जो oocyte है that will become enlarged. So that is known as primary follicles. Then what is secondary follicle? So ग्रेन्युलोसा जो सेल्स है वो एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करना स्टार्ट करेंगे, एंड जो कैविटी है एंट्रम है एंड फॉर्म्स है विद इन द फॉलिक्यूल्स, राइट. सो जब एंट्रम जो है वो स्टार्ट होगा डेवलप होना, सो जो फॉलिकल है दैट विल बिकम सेकेंडरी फॉलिकल. Also they secrete glycoprotein substance that form a clear membrane, that is zona pellucida, and around zona pellucida around the oocyte. After the 10 days of growth of the follicle, that is known as mature vesicles or vesicular follicles or Graafian follicles, they will form blister on the surface of the ovary, and they contain a secondary oocyte that is ready for the ovulation. You can see in this figure image, right? Primordial follicles, primary follicles, secondary follicles, tertiary and Graafian follicles, right? And corpus luteum. So this is all about ovarian follicles. So now what is ovarian cycle? So there is series of change that occurs and start when the formation of the ovarian follicles and the end with the degeneration of corpus luteum. So ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल्स मतलब कि कोई भी जो ओवरियन फॉलिक्यूल्स है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, बनना स्टार्ट हो रहा है, तब से लेके जो कॉर्पस लुटिया है उसका डिजनरेशन हो रहा है, तब का जो पूरा साइकिल है दैट इज़ नोन एज ओवरियन साइकिल. सो द सीरीज ऑफ चेंज दैट बिगन्स with the formation of the ovarian follicles and end with the degeneration of the corpus luteum, that is called ovarian cycle. So now what is ovulation? That is prompted by luteinizing hormone, and ovulated secondary oocyte that is ready for fertilization is still surrounded by the zona pellucida, and there are few layers of the cell that is called as corona radiata. If there is no fertilization occur, the secondary oocyte degenerate, right? Or if there is fertilization occur by the sperm, जो sperm है वो पास होगा थ्रू द कोरोना रेडियाटा एंड जोना पेलुसिटा, और वो एंटर होगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte में. So by the secondary meiotic division, the resinue to form a polar body and a mature ovum. So if fertilization does not take
क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो कॉर्पस लूटियम है दैट रिमेन फंक्शनल फॉर द 10 days and it will become degenerate into the corpus albicans, right? एंड अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो कॉर्पस लूटियम है, राइट, वो that will persist and continue its hormone functioning until the placenta develop and also secretes necessary hormones. So this is all about ovulation. ये जो summary है ovulation का, ovulation क्या है? So process of discharge of secondary oocyte on the surface of ovary. The time of ovulation usually occur 13 to 17 days of the 28 days menstrual cycle. And जो fate of ovum है that is discharge of ovum surrounded by corona radiata, that is following ovulation, is picked up by tubule fimbria. So slowly transmit to the tube toward the uterine cavity, and unless fertilized it survive only 12 to 24 hours, and it will after it will begins to degenerate. Then अगर ovum जो है that will disintegrated in tube, uterus or may be discharged from the uterus in the next menstrual bleeding. अगर वहाँ पे fertilization हो रहा है तो zygote जो है that get amended in the uterine endometrium and it will take about 4 days to reach it, and thus after this pregnancy will begins. So what is oogenesis? The formation of gametes in ovary, right? Oogenesis formation and maturation of ovum. So germinal epithelium cell जो है, आप यहाँ पे फिगर में देखोगे जो जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स है, राइट, दैट विल डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी oocyte, वो कन्वर्ट हो गए प्राइमरी oocyte में. जो प्राइमरी oocyte जो है दैट विल अंडरगो इन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में जाएंगे और पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेंगे. जो प्राइमरी oocyte है दैट विल कंटेन क्रोमोसोम 44 एक्सेस, राइट, सो दैट विल रिड्यूस इन हाफ. मीन्स फर्स्ट पोलर बॉडी है दैट विल कंटेन 22 एक्स एंड सेकेंडरी oocyte दैट विल कंटेन 22 एक्स, राइट. सो दैट विल 44 में से वो हाफ हो जाएंगे, राइट. सो जो सेकेंडरी oocytes है दैट विल देन दे एंटर इनटू द सेकंड मैच्योरेशन. वो सेकंड मैच्योरेशन में जाएंगे, सेकंड मैच्योरेशन म्यूटिक डिवीजन में जाएंगे और वो मैच्योर oocyte दैट इज ओवम बनाएंगे और वन सेकंड पोलर बॉडी बनाएंगे. जो फर्स्ट पोलर बॉडी था दैट विल ऑल्सो अंडरगो इन अ सिमिलर मैच्योरेशन म्यूटिक डिवीजन और वो 2 मोर पोलर बॉडीज बनाएंगे. सो इन लास्ट विल गेट 3 मोर पोलर बॉडीज, राइट. सो इन शॉर्ट फीमेल जो है गैमेट्स है दैट कंटेन ओनली 22 eggs. So this is the summary, the event of oogenesis and follicular development. Now function क्या है उसके, गैमेटोजेनिक एंड एंड्रोजेनिक फंक्शन है. गैमेटोजेनिक मतलब इसमें वो प्रोड्यूस करेगा और रिलीज करेगा ओवम को और एग को, ओवम और एग को. और एंडोक्राइन फंक्शन में जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसका सिक्रेशन करेगा, जैसे कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, प्रोजेस्टेरॉन, रेक्सिन एंड एंड्रोजन का सिक्रेशन. एंड अनदर इज oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो इन्वॉल्व होगा. देन नेक्स्ट इज मेमरी ग्लैंड. व्हाट इज मेमरी ग्लैंड? जो ब्रेस्ट होते हैं हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन है ऑफ द वेरिएबल साइज anterior to the pectoralis major and serratus anterior muscular and attached to them by a layer of the deep faccia composed of dense irregular connective tissue. जो each breast है, 2 breast है that contain one pigmented projection that is nipple. Nipple is series of closely spaced opening of duct that is known as laciferous duct. So they will emerge milk. Each breast contain mammary gland, modified serodiferous gland that produce milk, then areola that is pigmented area that contains sebaceous gland, and they divide into जो lobes है that divide into lobules that composed of alveoli. They are milk secreting gland and its development depend on the estrogen and progesterone. Milk production है that will stimulated by prolactin, estrogen and progesterone. Milk ejection production stimulated by prolactin, estrogen and progesterone, and milk ejection is stimulated by oxytocin. और इसके फंक्शन क्या है? सिंथेसाइज करना, सिक्रेशन करना एंड इजेक्शन करना मिल्क का, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स।